100 plus PMs, designers. How will you do you have a potential to learn from the maximum folks over there? And इंडस्ट्री का नेटवर्क है और आपकी कंपनी का नेटवर्क इतना बड़ा है तो आप कितना कुछ सीख सकते हो उनसे जो आपके पास पहले नहीं था. सो आई अनलॉक दैट एक्सेस. मैं कॉलेज से थिएटर करता था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास आज भी टाइम हो तो मैं एक्टिंग करना चाहूँगा. मैं परस्यू करना चाहूँगा एज ए हॉबी. आई फील लाइक आई एम अ स्टेज पर्सन. आई वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट द लाफ, ब्रिंग आउट दैट इमोशन इन द ऑडियंस. आज मैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू कर रहा हूँ वो चीज़, दैट ब्रिंगिंग आउट द लाफ, ब्रिंगिंग आउट दैट इमोशन. बट अगर मैं स्टेज पे होता तो मैं शायद अपनी बातों से कर रहा होता, मैं अपने एक्ट से कर रहा होता. जो दोस्तों से बात करता हूँ कि आई एम बैंगलोर गया कोई फ्रेंड, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस सुनाता है तो लगता है शायद मेरे को भी कर लेना चाहिए था. वो एक्सपीरियंसेस अमेजिंग होते. Welcome everyone to the next episode where we have Himanshu with us. पहले episode में we all learned how his adventurous childhood was, how he was tricked into a boarding school from where he got into engineering, wanted to be an artist, a doctor, eventually turned out to be an engineer. उसके बाद the entrepreneurial bug caught him. He tried different ventures. Again, the adventure continues. And now in this episode, we are going to cover how this entrepreneurship transforms slowly into job, into product management. And we learn like how has the romance been going with product management. So this episode is going to be a lot about his journey into product, into the world of products. So all those people who either want to be a kick-ass product manager or who are already product manager who want to just up the game, do sit tight and watch. So Himanshu, thanks for being with us again. And now take us through. आपने हमें बताया कि 2 entrepreneurial ventures आपने try किए friends के साथ. अच्छे ventures थे. Had you been there, they would have been like close to unicorns, if not unicorns earlier already. But anyways, tell us ki how life transformed after that. Sure. So, as we spoke, the second startup got shut down. Post that, we decided that I wanted to still build something scalable, something big, something tech-driven. Didn't know what. Luckily met Khushbu and Tanmay. They're the founders of Xyla Health. So I was primarily a master of design. As we figured that it came naturally to me. So the UX design and UI design, because I mastered over these years of my entrepreneurial experience, I was owning those things along with designing all the flows and doing the product work. But when I joined Xyla, I joined as a design person, design head. Within first month itself, when we have launched our first app experience, within first month we have completed that. The thing is, we were not having the lot of people logging the way we wanted, or the percentage of login was as expected. So I was just thinking about it, why it is happening, and why that is a question to all of us कि हमारा product experience क्यों सही नहीं चल रहा है, ये लोग enter क्यों नहीं कर रहे हैं. I went to talk to tech team and try to understand. तो पता चला loading speed low है, devices पे UI same नहीं दिखता है, and then worked along with that. Also सबसे बात करी टीम में, prioritize करवाया कि यार ये नहीं होगा तो revenue कैसे आएगा. तो ये solve हुई problem, हमने मिलके सबने solve करी. But that ownership I took, it was visible to everyone कि login बढ़े तो app experience सही हुआ, तो लोग ज़्यादा आए तो revenue increase हुआ, which was evidently visible. जब ये दिखा तो समझ में आया कि I'm not only a design person but I'm more of a product owner. कि मुझे overall चीज़ consumer experience के लिए solve करनी है ताकि मेरा business grow कर सके, which is the core product management skill. Correct. So my founder saw that and she elevated me to head of product and design. So I was leading both the functions over there. I didn't know much of a tech by then because मेरे पास पुराने startup में CTO था. He was looking after everything. And the thing is, when Tanmay exited as a CTO and co-founder, the another person, Aishwarya, came, and he had a grand vision to make it more tech organization. I started working with him and figured that if I do not owning tech things
more, then I'll not be able to think holistically and build that company which is more AI driven or more what we want it to be. So it was a chronic disease management, which is a virtual chronic disease management company. And to achieve that, we built a chatbot जो maximum आपकी queries as a patient system answer कर देगा. In the only seriousness, in the case of escalations, it will reach to humans. Okay. And also, if there is very serious escalation, it will reach to doctors. So we built that escalation ये mechanism. आप कौन से साल में कर रहे थे? ये 2018 की बात है. ओके 5 साल बाद आज भी लोग यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. 5 साल आज भी यही सॉल्व कर रहे हैं एग्जैक्टली. तो हम लोग बहुत अर्ली थे मार्केट के लिए. आई थिंक खुशबू का विजन बहुत अच्छा था हमेशा से कि हमें हम ना हेल्थ केयर को पेरिफेरीज में सॉल्व नहीं करना चाहते थे कि मेडिसिन ले लो, लैब टेस्ट खरीद लो हमसे, जो बेसिक चीज़ें हो रही हैं. डेफिनेटली दैट इम्प्रूव द मार्केट, बट वी वांटेड टू सिट एट द कोर. पेशेंट की जो कोर प्रॉब्लम है उस पर काम करेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम उसको ऑब्वियसली बेच लेंगे ताकि हम उसके मैक्सिमम वॉलेट शेयर ले सकें हेल्थ का. बट वी वांटेड टू बी इन द प्रिवेंटिव केयर एंड फिक्स दैट पर्सन. तो डायबिटीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज़ जो 2.7 क्रॉनिक डिजीज़ हर इंडिविजुअल को है, मतलब जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ होती है लोगों को इंडिया में 2.7 क्रॉनिक डिजीज़ ऑन एन एवरेज पीपल हैव. ओके. Along with diabetes, and diabetes is the root cause of every other disease afterwards. Retinopathy, आपकी जितने भी nerves होती है, nerve sensitivity, सब खत्म होने लगती है. Per person you're saying will have 2.7. 2.7. Okay, so even I have 2.7 chronic disease. So that's logically, if okay, yes. okay. So I'm saying on an average, you might have one, somebody have 4. Okay. That would be the Okay. case. Now the scenario is कि हम इसको सॉल्व करना चाहते थे. हमें समझ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आने वाले और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. सब लोगों को डायबिटीज होती जा रही है. यंग पीपल ऑल्सो गेटिंग डायबिटीज. वी हैव टू फिक्स दिस, एंड द वे टू फिक्स दिस इज नॉट कि ट्रांजेक्शनल आओ ये ले लो या कुछ खरीद लो या कंसल्टेशन लो. इट हैज़ टू बी कॉन्वर्सेशनल, विच वी built as our part of core product strategy कि हम इसको conversational बनाएंगे. We brought nostalgia into it. We brought other things like reminders should not be pushy. The person should not feel sick at the end of the day while talking to us as a platform. So that core product thinking helped us to gain the share. We had 3 to 5 lakh users in the first 4 years. interesting. 3 lakh and eventually after I left, it's like 5 lakh users now. Okay. And still growing in the B2B segment. So now almost 1 million users on the platform now. Wow. So grown rapidly. So this is where you transformed into a pakka product. Pakka manager. product person. I stayed there for 3.5 years, spent a major time. I was feeling that I was building something substantial. The thing is, I had a bug in my own mind in a way कि यार who am I? तो मैंने स्टार्टअप किया, एक स्टार्टअप, दूसरा स्टार्टअप, अभी तीसरा भी मैं कर रहा हूँ. बट आई वॉज ऑलवेज इन द स्टार्टअप जर्नी. My existence in the world out there, when I'm seeing my friends who are doing MBAs, getting the posh jobs, I did not have that thing. So मैं पहले founder and CEO #trends, and then head of product and co-founder Kalaj, and then eventually head of product only. And I was being the next step for genuinely for me to know more about the scale to everything. Is to join a bigger company. There are 2 ways. I can directly join a bigger company or I can go for an MBA. I logically made my mind that I wanted to go for an MBA now from outside India. But somehow Ola worked out for me. Ola Electric was building EV, that too in the e-commerce. And as a product manager, I feel कि सबको e-commerce में एक बार तो काम करना ही चाहिए. Amazing B2C, data driven. I strongly agree with that. Right? Yeah. So e-commerce is something which I was always wanted to work on. जब से मेरे को समझ में आया था कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं, बहुत पीछे साइंस जाती है. तो I got that luckily, and that moment I make a decision कि यार मैं MBA क्विट करता हूँ, ये वाली चीज़ परस्यू करता हूँ. ओला ज्वाइन किया. ओला I was very lucky to build e-commerce, order fulfillment entirely led from the scratch to a place where जहाँ पर हमने 3,000 करोड़ का बिजनेस किया उन प्रोडक्ट्स के थ्रू. We led that entire function, entire stakeholders of 80 plus stakeholders in the company. Wow. To from the compliance, legal,
a large team of designers, product, data, business finance, operational business planning, strategy, on ground fleet, logistics management. एंड ये सब करते करते जो मेरे को चाहिए था, स्केल पे चीजें कैसे ऑपरेट होती हैं, 1000 पीपल कंपनी में कैसे काम होता है, जब आप 1 मिलियन, मतलब आप 32 मिलियन यूजर्स हैं ओला कैब्स के पास, तो वो कैसे टारगेट कर रहे हैं लोगों को, व्हाट साइंस इज गोइंग बिहाइंड दैट, आई वांटेड टू सी दैट, बिकॉज मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल 1 मिलियन तक था. वो ये देखा जब मैंने, द होराइजन गॉट चेंज्ड, ये बड़ा हो गया होराइजन. एक सेंस ऑफ स्केल आता है, एक सेंस ऑफ स्केल आता है. मेरे केस में Amazon gave me that and that's a very good realization to have, right, that this is how businesses are built. See, otherwise Amazon से पहले वे वही हो, I was with Adobe. So Adobe का भी स्केल बहुत बड़ा है, ग्लोबल बिजनेस एंड SaaS बिजनेस. Amazon का B2C है, तो आपको और B2B B2C का एक नया सेंस आ गया होगा. Correct. So similarly it's like स्टार्टअप की दुनिया देखिए, अब स्केल पे कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं वो भी समझ में आ रहा है. तो कहीं ना कहीं, और अभी तक आप लीडर की तरह एक्ट कर रहे थे हमेशा, कि आप ही को करना है जो करना है, आप ही को सोचना है, आपको करवानी है चीजें, आपको अपनी टीम बनानी है. दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गेट इनटू द मिडिल मैनेजमेंट लेयर एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल upwards you, whom you are reporting to, or there are people reporting to you as well. How will you act in such balance? How will you create the balance here? Then there are 100 plus PMs, designers. How will you do you have potential to learn from the maximum folks over there? And इंडस्ट्री का नेटवर्क है और आपकी कंपनी का नेटवर्क इतना बड़ा है, तो आप कितना कुछ सीख सकते हो उनसे जो आपके पास पहले नहीं था. सो आई अनलॉक दैट एक्सेस, एब्सोल्युटली, व्हिच इवेंचुअली फिगर्ड कि जब मैंने ये बना लिया, मुझे लगा कि मैंने वो अचीव कर लिया, देन आई मेड द नेक्स्ट मूव की अगेन वांटेड टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, समथिंग वेरी स्केलेबल, समथिंग अमेजिंगली D2C ओरिएंटेड, B2C मतलब D2C ब्रांड. तो आको लाइफ इंश्योरेंस जो है अभी हम बना रहे हैं, तो आको को लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस मिला, एंड आई got the chance to build it from the scratch. Again 0 to 1 product. 0 to 1, and then eventually, because we have all the resources, we'll again see 1 to 10 journey very quickly. So that's where the entire mindset is growing. So if you connect the dots, like as I feel, it's like a triangle, inverted triangle, which is helping me starting a company, leading a function as a founder, then leading only a function in a company, then leading a vertical, and then this is going in this smaller direction where I'm PM at a, maybe next step would be I'll join PM at Google. I deeply desire to do that. So, and if I'll be there, this like my journey reached to a point where I achieved the excellence in one particular function, one particular domain, being the most consumer friendly PM. That's what I wanted to become. The next journey would be I wanted to grow from here again in a wider way, that I would grow as a team leader, as a person who can manage a lot of folks, as well as suite of products, and developing business sense at the same point of time, developing understanding on finance, legal, compliance, various other functions, polishing the skills of managing things more professionally, and eventually the end goal would be to either run your own company, build a great product, run your own company, or lead some other company from the top perspective, like becoming a CEO and lead the entire company. Absolutely. So what we understood from your journey, like first half of your story was life was happening and you were playing around. Second half, you tried certain things, they worked to a certain sense, you moved on. Now it seems like all this knowledge now has a plan. And it will add up to something bigger, better. We are very confident about that, and looks like you are going to be a kick-ass PM. I'll take a segue from here. Would you want to go back and rewrite something? Like if we give you an undo button on life, would you want to undo something in your past life? Help us. How do you think about that? Very interesting. When I think about it, I don't feel like आज जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ, या मैं जो कर पा रहा हूँ, मैं जो पैसे कमा पा रहा हूँ, तो आई डोंट फील कि आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज दैट नेचुरली प्लेड फॉर मी. क्योंकि ये समझ में आ गया कि यार एक स्टार्टअप किया तो कि दूसरा टेक में इंटरेस्ट आया तो वो डिस्कवर कर लिया. तो जैसे जैसे इंटरेस्ट आता गया
कि टेक के बाद भी अभी भी बड़ा बड़ा कुछ बिजनेस बनाना था तो ज़ाइला ज्वाइन किया। ज़ाइला के बाद जब और स्केल देखना था तो एफर्ट मारे। ओला कोई अकेली कंपनी नहीं थी, बहुत जगह एफर्ट मारे, एक जगह हुआ तो यहाँ घुस गए। उसके बाद भी अभी जब फिगर आउट कर रहा था कि और क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है तो फिगर आउट किया कौन सी अच्छा B2C ब्रांड है, तो फिगर आउट करते करते यहाँ पहुँचे। बात तो बहुत और जगहों से करी, बहुत लोगों से बात करी, तो कहीं ना कहीं नेचुरल जर्नी से पहुँच गए। इफ़ आई हैव अ रिग्रेट अबाउट दैट, आई डोंट थिंक सो। शायद मैं वो नहीं होता जो मैं हूँ आज, अगर मैं, शायद हम बात नहीं कर रहे होते, यू वुड नॉट हैव बीन इंटरेस्टेड, नॉट दीज listeners who are listening to us might not be interested in talking or listening to this. Everything you did played a role Correct. in getting you here. But if I think about it, what else extra things I wanted to do in my life, मैं कॉलेज से थिएटर करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास आज भी टाइम हो तो मैं एक्टिंग करना चाहूँगा, मैं परस्यू करना चाहूँगा एज ए हॉबी। मैं जब भी मुझे मौका मिले मैं थिएटर करूँ, मुझे मौका मिले तो मैं शॉर्ट फिल्म्स में एक्टिंग करूँ। इवेंचुअली अगर मुझे और कहीं चांस मिले तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू बी पार्ट। और वो सारा आइडिया आई थिंक कंज्यूमर लेंस को समझने वाला है कहीं ना कहीं। आई फील लाइक आई एम ए स्टेज पर्सन, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग आउट द लाफ, ब्रिंग आउट दैट इमोशन इन द ऑडियंस। आज मैं अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू कर रहा हूँ वो चीज़, दैट ब्रिंगिंग आउट द लाफ, ब्रिंगिंग आउट दैट इमोशन। बट अगर मैं स्टेज पे होता तो मैं शायद अपनी बातों से कर रहा होता, मैं अपने एक्ट से कर रहा होता। मे बी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। द सेम वे मैं लिखता हूँ तो मैं जो भी मैं सीखता हूँ डेली, मुझे लगता है कि हम ना एक साथ बहुत कुछ नहीं सीखते, हम धीरे धीरे छोटा छोटा सीखते हैं और रिपीटेडली उसको रिपीट करते हैं। True. मतलब एक हैबिट बनती है हमारी, तो और इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ तो हम ग्रो करते हैं। तो इसलिए मैं लिखता हूँ लिंक्डइन पे कि हाउ कैन यू बिकम 1% बेटर एवरी डे। वो सब आइडिया यही है कि और वो राइटिंग, आई वॉज अ वेरी बैड राइटर, मेरी इंग्लिश बहुत गंदी थी, मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं लिख भी सकता हूँ। वो करते करते मतलब मैंने स्टार्ट किया बहुत डर डर के, लाइक स्टार्ट विद अ वन लाइन कि एक लाइन लिखेंगे और इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन है। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हुई, इवेंचुअली पैराग्राफ्स बन गए। इवेंचुअली इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि होगी ग्रामर की गलती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट वांट टू नैरेट अ स्टोरी व्हाट यू लर्नड सो दैट अदर पर्सन कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो वो सारी बातें धीरे धीरे होने लगी। तो आइडिया इफ यू सी, या तो मैं बोल रहा हूँ या मैं एक्ट कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ या मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, just wanted to bring out something what I'm thinking, what I wanted to bring out from the audience. I'm trying to do that. Got it. In any role. So yes, if I was not a PM, अगर मैं नहीं होता तो शायद मैं एक्टर होता, शायद मैं राइटर होता, Interesting. कुछ और कर रहा होता। Very interesting. But these are very adjacent roles. You're still telling your story, if not in words, then in a product. Yes, right? yes. Great. एक और क्वेश्चन, लाइक ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने जिस तरीके से बिल्ड करी और अ सेल्फ मेड पर्सन बाय नाउ, वेरी इंस्पायरिंग फॉर अदर्स हु वांट टू ट्रेस द सेम जर्नी। आर देयर एनी रिग्रेट्स इन द स्टोरी? रिग्रेट्स इन द स्टोरी, कभी कभी लगता है मुझे कि मैंने बहुत पहले 4 साल आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट, डिड नॉट हैव मच इन द सेविंग्स। लोगों ने बहुत जल्दी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करे, तो कभी पिंच भी करता था, अब नहीं करता उतना, बट उस टाइम करता था। और कभी सोच लेता हूँ तो शायद कभी कभी लग भी जाता है कि यार मे बी इफ़ आई वुड हैव स्टार्टेड अ करियर लाइक माई फर्स्ट जॉब विद दी, मैंने थोड़ा सोचा होता, ZS से किया होता, जिस कॉलेज में आती थी कंपनी, या फिर डेटा एनालिटिक्स से किया होता, प्रोडक्ट एनालिटिक्स में जाके फिर मैं फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट मैनेजर बन गया, अमेजोन में आ गया, देन इवेंचुअली मैं गूगल में चला गया। एक बहुत ही कन्वेंशनल बट बहुत अमेजिंग करियर जिसमें आपको सारे डिफरेंट स्टेजेस आप देखते हो फ्रॉम टॉप टू, एंड देन ये एक लीनियर बात है कि मैंने यहाँ से शुरू किया और मैं लिटरली CEO की जर्नी यहीं से शुरू कर रहा हूँ। करेक्ट। मेरे केस में थोड़ा अपोजिट था, ऐसे आया फिर वापस से डाइवर्ज होगा, तो रिग्रेट नहीं होता इतना ज़्यादा, बट कभी कभी लगता है कि यार जब दोस्तों से बात करता हूँ कि आई एम बैंगलोर गया कोई फ्रेंड, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस सुनाता है तो लगता है शायद मेरे को भी कर लेना चाहिए था। वो एक्सपीरियंसेस अमेजिंग होते हैं। शायद जब कोई बताता है US का, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में। एब्सोल्युटली। सो
at the end of the day, because you are so ambitious, you want to do everything. You wanted to. You're a student of life, so you want to learn everything, have every experience in the world, but you cannot have everything. Sure. So regret नहीं है, I think ठीक है, मतलब Yeah, it's all. कभी जब every जो मौका story is मिलेगा, unique. everything हाँ, life is planning something for me. Sure. एक और चीज आपसे पूछनी थी. We know that you do a lot of other things rather than just working at Echo. You are a very passionate product guy, and you contribute to this ecosystem, to this community. Yeah. And even by talking to us, you are sending that message to the community. Tell our audience what keeps you occupied other than your work at Echo as a product person. What all do you do Sure. other sure. than being at office? Yeah. So जॉब क्रैक करना, मतलब ओला किया, Echo किया, 2 प्रॉपर जॉब्स थी, इंटरव्यूज थे 6 7 राउंड्स. तो ईजी तो नहीं था. इस जर्नी के अंदर बहुत कुछ समझ में आता है कि इफ 100 ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू क्रैक दिस जॉब, इट्स नॉट ईजी. यू माइट नॉट हैव होल्डिंग अ टाइटल ऑल्सो इन टू द सेम डोमेन, बिकॉज आप पहली बार ही घुस रहे हो. अब क्या करोगे आप, राइट? तो बहुत सारे आपने खुद के प्रैक्टिसेस डेवलप करे, जैसे कि आप जैसे ही कोई नया इंटरव्यू में बैठते हो, तो सामने वाला आपसे पूछे, उससे पहले तो आप पूछ लेते हो, हाय, हाउ इज योर डे, हाउ आर यू डूइंग टुडे, एंड यू आर सेटिंग द नैरेटिव, नॉट द इंटरव्यूअर, एंड यू ट्राइंग टू होल्ड द कॉन्वर्सेशन. वो बोलता है कि टुडे वी विल डू अ केस स्टडी, आप बोलते हो कि ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द केस स्टडी, लेट्स डू इट टुगेदर. यू शो दैट यू आर एक्साइटेड, यू आर कॉन्फिडेंट. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं Oh, yes. जो एक्सपीरियंस से पता चलती हैं. लकीली मेरे को पता है, आपको पता है, हमने वो चीज़, हम वहाँ मेहनत करके पहुँचे हैं. बहुत सारे जो बच्चे हैं जो ये इस जर्नी में, उनको टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत स्मार्ट है, पर ये नहीं समझ पा रहे सॉफ्ट वाला एरिया. Correct. और ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उस इंटरव्यू के अंदर, उस चीज़ को ओन करने वाली बात है, ये उन तक कहीं ना कहीं उनको हेल्प करना. आई थिंक कि बहुत सारे स्मार्ट लोग पीछे रह जाते हैं जस्ट बिकॉज दे डोंट नो दिस. हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट दैट वे? एक थॉट है ये. दूसरा, एज वी आर ग्रोइंग इन टू इंडस्ट्री, मुझे 9 साल हो गए, तो बहुत सारे यंग पीएम से आप उनको गाइड भी करते हो, कोच भी करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करें. इवेंचुअली यू एज अ टीम विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स. अब उसको कोच करने के लिए मुझे उसको भी सिखाना है. उसको सिखाने के लिए मुझे खुद को आना चाहिए ना कि सिखाते कैसे हैं. तो मैं खुद का ही बेनिफिट सोच के आई स्टार्ट टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल कि उनको सिखाऊं, ताकि मुझे भी समझ में आए सिखाया कैसे जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग. तो उनसे बात करता हूँ तो मुझे अपने बारे में पता चलता है कि मुझे कितना बोलना आता है. अब आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि इंस्टाग्राम का बिजनेस ग्रो करना और चाय की टपरी ग्रो करना बहुत सिमिलर है. और ये एनालॉजी मैं यूज करता हूँ अपने कॉन्वर्सेशंस के अंदर. तो जो सुन रहे हैं और जो जानते हैं, मतलब जिन्होंने किसी ने मेरी क्लास अटेंड करी है तो उनको पता होगा कि वो, क्योंकि चाय की टपरी इमेजिन कर सकते हैं, उन्होंने डेली देखी है. इंस्टाग्राम की टीम में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है. बट व्हेन आई विल बी एबल टू गिव एनालॉजी, दे आर फीलिंग कि वो अगर प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं वहाँ, तो वो कैसे सोच रहे होते. एंड दैट्स, एक होती है प्रैक्टिस और एक होती है स्टडी. तो ये लोग स्टडी तो कर रहे हैं पर ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे बिकॉज ये उस रोल में नहीं है. आई वॉन्टेड टू गिव देम अ मेंटल मॉडल ताकि वो प्रैक्टिस कर पाए, ताकि वो बेटर बन पाए, ताकि वो जिस दिन स्टार्ट करें किसी जॉब में, एक पीएम जो सीनियर पर्सन है उसको शायद उतनी मेहनत ना करनी पड़े इस बंदे पे, एंड दे वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट, eventually helping the overall community, eventually helping the better products to come out. Got it. Eventually overall economy सब चीजें positive direction में move करेंगी. So छोटा effort है, but वो help कितना. Every small effort. I would rate my life extremely gratifying if I'm able to get 10 people to a small number as 10. Like Yes. we touch 10 lives and we change those. So Yes. that's Yes. very gratifying. And, Yes. Great. So what all initiatives you run? What all? मतलब I teach at Next Leap. I help people do practice mock interviews with Upraised, Next Leap as well. I also associated with Masters Union in the different capacities. There are various other places, big colleges. Like I recently been to BITS Hyderabad for workshop. So I keep visiting colleges whenever I get the chance. I'm associated with a mentor on Ally with TPF. Nice. I run my own podcast, Humans of Product, so that I'll be able to get the best minds
and able to share what they are thinking with the world, how their thought process is in terms of thinking for a particular concept. These are few things. Along with that, I keep writing almost every day on LinkedIn as how you can grow as a better PM by putting us one small effort every day. Nice. तो जैसे वन क्विक एडवाइस है कि आप अपनी कंपनी में कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लीगल ये कंप्लायंस वाले लोगों से आपने बात करी है, आपको क्या पता वो कैसे होता है. जस्ट शेड्यूलिंग अ 30 minutes मीटिंग, हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, build a network, build a knowledge, and once you have that kind of network, you build another level of confidence with that. Great. So many things happen. Like keep sharing those small snippets with people. With and people. We have the medium. Yes. Great. So this is what I keep doing. Also run a publication called Think User, user research oriented publication on medium.com. Okay. Probably a lot of efforts. I'll be doing this. I'll do more whenever I get the chance. This is very interesting and fascinating. And for users, it's always easy to spend your weekends in a microbrewery. There are so many of those in Bangalore. But this guy is making a genuine effort to bring more better product managers into the industry. So hats off to your efforts. Hats off to your energy. It is infectious. Like something in me would change after this conversation, and hope for a lot of our viewers as well. So thank you for giving us this conversation, giving us your time. Highly excited to take this to our viewers. Thank you so much. Really appreciate for getting me here and giving me this opportunity to speak with your listeners. Thank you. Thank you.